Hello, everyone. It's a celebration time for all of us as Academically has achieved a hat trick and maintained a streak of over 90% success rate for the third time in a row. On this special day, I would like to welcome our founder and CEO, Dr. Akram Sir, who is truly the hero of Academically. And we can't deny the fact that almost every student is inspired by him and his journey. Welcome, sir, and thank you so much for joining us today. Thank you so much, Nidhi. Yeah. So, sir, how are you feeling? What is the feeling right now? 90% of more than 90% of students have qualified for the CAPS exam. So, how are you feeling right now? Yes, I am feeling very very good. Basically, कि when I start this academically, तो मेरा aim जो था यही था कि अगर एक भी बच्चे की academically can help, तो वो इंडिया से अगर ऑस्ट्रेलिया में आके प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है तो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा. इट इज नॉट उसकी लाइफ में, उसके जो एंटायर इकोसिस्टम होगा, उसके पूरे आसपास रिलेटिव्स होंगे, उसके होता है किसी गांव को, तो पूरा गांव उससे इंस्पायर्ड होगा और बहुत सारे बच्चे आगे पढ़ाई में बढ़ेंगे और फिर जो है देश भी आगे बढ़ेगा. राइट. तो दिस इज आवर एम बेसिकली इन पर्सनली मेरा, कि जितने बच्चे पास किए 150 प्लस एट एकेडमिकली से इन दिस टाइम. दिस इज आई थिंक हाईएस्ट नंबर फ्रॉम एकेडमिकली से बच्चे अभी पास किए. तो अभी दिस थर्ड टाइम है हमारा के 90 प्लस परसेंटेज पास करते हैं एट एकेडमिक. आई एम फीलिंग वेरी गुड. बेसिकली आई कैन नॉट एक्सप्रेस Yeah. माय the happiness in the words. Basically, I remember, my first video I recorded from my university when I was doing my PhD, because I was looking कि PhD के बाद क्या करें. तो मेरे किसी एक फ्रेंड ने बताया, वो सऊदी अरब का था, कि भाई ये एग्जाम होता है कैप्स एग्जाम, एंड यू कैन राइट एग्जाम एंड यू कैन बिकम ए फार्मासिस्ट. तो तब से मैंने रिकॉर्ड किया था. तब से मैंने कहा यार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंडिया से दे कैन कम टू ऑस्ट्रेलिया डायरेक्टली आफ्टर द राइटिंग दिस एग्जाम एंड दे डोंट नो, इवन आई डोंट नो बेसिकली, जब अंटिल आई केम इन ऑस्ट्रेलिया. तो आई एम वेरी हैप्पी बेसिकली कि अभी हम पिछले 2 साल से बहुत सारे बच्चों को हमने हेल्प किया जिन्होंने क्रैक किया और दे आर प्रैक्टिसिंग वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया. Sir, obviously, it is indeed a very, very happy and proud moment for all of us as Academically. And I'm sure that you must be very happy for all of this after seeing the result for the third time, this good result. So, sir, moving forward to my next question, anything you would like to say to the students who have qualified for the CAPS exam, because they have also worked hard. So, any message from your side to them? Yes, so basically this is the victory is because of your hard work. हमने तो जो पढ़ाया है वो तो ठीक है. आई मीन मगर आपने बहुत ही डेडिकेटेडली जो है अपना हार्ड वर्क दिया है. पर इट जस्ट कि अभी आप मिड वे में हैं. आई कहूँगा कि 60% आपने अभी लाइफ का जो टफ पार्ट है वो पास कर लिया है. अभी जस्ट 30% 40% बाकी है और अभी से ही आपको जुड़ जाना है इंग्लिश एग्जाम प्रिपरेशन में, whether it is PT, IELTS or OET, but PT, OET highly recommended for you. And once you pass this exam, then apply your EOI and visa. And I'm here to help you. And I'm welcoming you to. I will see you, some of you in Sydney. Basically, if you are in person coming to Sydney. यस सर. तो अभी तक हमने जितने भी इंटरव्यूज लिए हैं उन सारे इंटरव्यूज में आपके बारे में सारे स्टूडेंट ने बात करी है और सब ने आपको पर्सनली थैंक यू बोला है. तो सारे स्टूडेंट सर जो आपसे इंस्पायर्ड हैं उनके लिए भी आप बहुत इंपॉर्टेंट हो और वो लोग भी बहुत ही इक्वली एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जब जाएं या सिडनी जाएं. तो सर विद द प्रोफेशनल थिंग दे हैव ऑल्सो कनेक्टेड विद यू पर्सनली, विच इज आई थिंक अ वेरी वेरी गुड थिंग कि उन लोगों को आपसे भी पर्सनल कनेक्ट बहुत ज्यादा है. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग सर. सो सर हमारा एक और क्वेश्चन था जो बहुत लोग जिस चीज पे कंफ्यूज थे कि सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर क्लियरिंग द कैप्स, दैट नाउ दे हैव क्वालिफाइड फॉर द कैप्स, सो व्हाट टू डू नेक्स्ट. Yeah, जितने भी basically if you are from academically, so we are going to conduct a one special webinar for you. Last since you passed basically this exam and I'm working for you. So what next for you? For example, how you can crack a job in right now in Australia. तो कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स पे आपको जॉब मिलेंगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, और क्या करना है अपनी. अपार्ट फ्रॉम दिस आपका CV, कवर लेटर, इंटरव्यू प्रिपरेशन, and then apart from this, how you can register with APRA as a provisional pharmacist. What are the documents required, what are the requirements for them, what are the fees, and all those things will guide you. Apart from this, the visa also. So currently which visa you can apply and EOI and all those things, so I will guide you in all those things. We are working currently, I know. So I think next Wednesday we are going to conduct a separate webinar especially for you, so you can interact with me and ask any questions you have. So I will highly recommend it for you. Please note down your questions so far whatever you have in mind, but I am sure कि जब हम webinar करेंगे तो हम पूरे क्वेश्चन को आप क्लियर कर देंगे 100%. और कुछ भी रह जाता है तो आप मेरे से क्वेश्चन आप इंडायरेक्टली कर सकते हो. तो A to Z बेसिकली विल गिव यू द इंफॉर्मेशन
what next after the CAPS. Okay, sir. I'm sure that this webinar will be very, very useful for all the students because everyone is confused on what to do next, and they are all कि Akram sir ही हमें अब बताएंगे. So sir is going to give you a webinar, everyone, so you all can prepare your questions for that. So yes, sir. So moving forward to my question, sir, can you tell us a little about the best job opportunities for CAPS? So basically, CAPS means you are a pharmacist. You are going to be a registered pharmacist in Australia. So registered pharmacist can work in hospital and retail pharmacy. Okay. Salaries are very good, but your aim must be in Australia to become a clinical pharmacist, consultant pharmacist, pharmacy managers, और जितने भी जो हायर पोजीशन फार्मेसी के अंदर वो आपको अचीव करना. इट इज नॉट जस्ट कि आप फार्मेसी बन गए, फार्मासिस्ट बन गए, आपको 3-4 लाख रुपए मिल जाना, आप हैप्पी हैं. ऐसा नहीं करना है. आपको लाइफ में अभी बहुत आगे बढ़ना है. तो कॉन्स्टेंटली आप मेहनत करते रहेगा. आई एम हियर टू हेल्प यू बेसिकली जितना भी हमसे हो सकता है एकेडमिकली पर. Okay, sir. And sir, just my last question with you. Would you please tell us a little about how academically helps student qualify their exams? So at Academically, as I mentioned, that we have last 10 years based on that question paper, we have created our syllabus, and we always constantly we change. We basically update our syllabus. That's why we are speaking last several times. The 90+ student percentage pass from academic. So we provide live sessions, live classes from module wise. For example, cardiovascular system or GIT or CVS, and then we will give you lecture. Will discuss with you last 10 years questions from that particular topic, and then after that we will recommend you to go in our portal at LMS, at Academically LMS. Basically we provide our coaching through the LMS. So हमारा अपना ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन iOS पर एंड्रॉइड पर, और यू कैन बी एक्सेस थ्रू द लैपटॉप डेस्कटॉप व्हाटएवर यू हैव. सो उसमें फिर हम लोग आपको मॉक टेस्ट यू कैन अटेंड एज मेनी टाइम्स यू वांट. इवन जो रिकॉर्डेड सेशन जो लेक्चर हम लोग देते हैं उसको हम रिकॉर्ड भी करते हैं. बाद में आप जितनी बार भी आपको देखना है आप देख सकते हो. एंड देन और जितनी बार भी आप रिवीजन करना है आप कर सकते हो. एंड इफ योर स्कोर इज कमिंग लिटिल बिट लो, देन आवर लेक्चरर विल फाइंड आउट हु इज दिस कैंडिडेट, व्हाई इज कमिंग द लो, एंड वी विल ट्राई टू improve your score, why you are not improving in this. For example, calculation, some student is cleared from calculation, some student think that the chemistry is very tough part for them, but no need to worry. At Academically we will take care from A to Z. Many students pass this exam in 45 days. I remember one student from Javed from Pakistan, he passed his exam 45 days. Another student pass in like 55 days. तो 2 महीने में भी आप लोग पास करके आप ऑस्ट्रेलिया, तो इससे बड़ी बात क्या है एकेडमिकल. तो हम लोग तो I'm very proud and happy basically. Thank you so much. And sir, indeed, Academically has helped a lot of students because we have been taking a lot of We are not interviews. just helping you to pass the exam. After what next after CAPS? Okay, once you pass the CAPS, after that also we will help you regarding how you can find a job in Australia, internship findings, and the visa assistance. And we also provide the assistance for you to how you can register yourself with APRA. So personally, I will give to this information to all my students. Thank you. That's it for today, sir. And indeed, this session will be very motivating because almost every student is waiting for your video and your message, for all of them who has qualified for CAPS exam. So thank you so much, sir, for coming and joining us. And yes, everyone who wants to join Academically now can definitely connect with us on our website, on our social media platforms, and our team will definitely be in touch with you and connect with you. And thank you so much for watching us, and thank you, sir. Thank you. Thank you, Sunidhi. Bye. Thank you so much, sir. Bye bye.